Law is the foundation of justice, shaping societies and guiding progress. Today, we are privileged to welcome Ms. Nandita Gugnani, an accomplished legal academic and an inspiring figure in the field of law. Ms. Gugnani currently serves as an assistant professor of law at Gujarat National Law University, Silvassa campus. Her academic journey began at GNLU Gandhinagar, where she worked as a teaching and research assistant from September 21 to June 23. Since July 23, she has been enriching the academic environment of GNLU Silvassa with her expertise in academic administration and legal assistance. With her extensive knowledge and passion for the legal profession, Ms. Gugnani is a source of inspiration for aspiring legal minds. We are truly honored to have her here today to share her insights and experience. I would now request Dr. Krunal Soni to welcome Ms. Gugnani with a bouquet of flowers. Okay, so the first question you should ask, when you're doing any course, any subject, any paper, first semester, her subject mein, that why are we studying this? So I want to understand from you, possibly, why are we studying law? Or why is there even a need of law? Right? So there is a school के बाहर बच्चे हैं, तो पता है कि गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, बच्चे भाग सकते हैं, but we still have to write a notice board that, drive under 20 kilometers per hour. Motor Vehicle Act tells you to wear helmets for your safety. And still there are violations. मतलब हम लड़ रहे हैं पुलिस से कि आप हमको safe क्यों देखना चाहते हो, right? So there is a need to understand why there is law and what is the problem, why there is violation of law in a society. So before we get to that, I also want to talk to you about career in law. What are the possible things that you are all undergrad students, right? First year. So what you can possibly, if you feel, after 3 years, you want to pursue law, how does one go about that? First President of India, Dr. Rajendra Prasad. First Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Mahatma Gandhi, father of the nation, all three were lawyers. If you look at any freedom fighter, most people who have made a change in shaping our country were all professional lawyers. Even today, former, IFS Sushma Swaraj, she was also a lawyer. There are so many examples of lawyers who have played a very important role in shaping our society. So what usually happens is after class 12, there is a 5-year course. Students give CLAT exam and they do that 5-year course and then you become a lawyer and you can practice in any court. However, there is also 3-year law. For example, I did BA English Honours and after that I did 3-year law. And I just want to tell you, I usually challenge everyone that if you tell me your area of interest, आप मुझे बताएंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है, I will tell you how you can make a career in law out of that. Because law is everywhere. If you go into a shop, you're buying a packet of chips, you're engaging in a contract, right? You're using Instagram, terms and conditions, you have read. कोई कभी पढ़ता नहीं है, but we say that, we've read the terms and conditions. So everywhere there is law in every field of life. So just want you to know there is a 3-year LLB course if anyone ever feels that, this is an area where I want to go or, law is where I will thrive. Of course, there is a very increasing demand of legal professionals. Even in COVID, क्योंकि लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती है, people are in fact getting more hot-tempered by the day. People are filing more cases. So lawyers will never go hungry. There is always, some or the other employment that is there. Now, just to very briefly, in 2 minutes, tell you what are the career options. So it's not just that you become a lawyer. The first thing is, of course, you become a lawyer. आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हैं, but it's not, कि एक ही टाइप का लॉयर होता है. There is family lawyer, that's a divorce lawyer. There is criminal lawyer. तो अगर कोई murder case है, theft case है, fraud case है, they will do that. There are civil lawyers. आपकी कोई property फंस गई है, right? कोई papers नहीं मिल रहे हैं. Someone, you've paid DLF for a flat, but you're not getting your flat. What to do? Civil lawyer. Income tax lawyer, almost everyone
some or the other time needs an income tax lawyer, right? Cyber law is coming up in a very, very big way. You've all watched this series, Jamtara, सुना हुआ है हमने उसके बारे में, right? There are so many cases. अभी नया जो latest scam चल रहा है, there is something called digital arrest, and people do fall for it. तो हमें लगता है कि हमें पता है, but you know anyone is prone to scams. So there are so many fields. You can also become an in-house counsel. In-house counsel मतलब कोई भी बड़ी कंपनी है, राइट? अगेन यू टेक हल्दीराम्स, यू टेक बिस्लरी, यू टेक स्टारबक्स. इनफैक्ट आजकल तो जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके पास भी लॉयर्स है. सो एवरी एंटिटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ लॉयर, बिकॉज प्राइवेट स्कूल पे भी केस हो रहा है, कॉलेज पे भी केस हो रहा है. माई कॉलेज ऑल्सो हैज़ अ लॉयर. यू नो एनी टाइम देयर इज एन RTI दैट इज फाइल्ड, वी हैव टू रिप्लाई और एनीथिंग लाइक दैट हैपन्स. यू कैन ऑलवेज गिव जुडिशरी एग्जाम्स. आप जिस भी होम स्टेट से हैं, शायद आपका डोमिसाइल भी हो उस स्टेट में, सो यू कैन कंसिडर बिकमिंग अ जज. ऑफ कोर्स देयर आर पब्लिक सर्विस, पब्लिक कमीशन एग्जाम्स आर देयर. Anyone who wants to join the army, there is a separate exam called JAG, which is judge in the army, and that is also very, very good opportunity. You know, you have to pass a very simple exam. Like me, you can become a professor, you can become a researcher, you can work with some NGO, you can work in the parliament policy. तो law, parliament का काम क्या है? Law बनाना, right? So they have drafting, legislative drafting departments, and you can join those. Anyone who is considering UPSC, you all would know कि UPSC में एक optional subject choose करना होता है. So law is a very good optional subject to choose क्योंकि concise syllabus होता है, right? So just trying to nudge you into the direction of, you know, joining us. I hope you all know it's scripted. ठीक है ना? But this was just, you know, an example to show you. This is the kind of cunning, this is the kind of critical thinking that is expected. That is expected from someone who's a lawyer. Okay. I want you to just introspect. Tell me the difference between these three words. Right? So law, कानून, justice. What is justice? न्याय. Morality, नैतिकता. So these are three things. Are they always the same? Law and justice are always the same? No. So if we look at law, what is law, right? So law in the Hindu mythology, you will say dharma. In Islam, you will say it is hukum. But law basically talks about a body of rules. You know, this body has been established by a particular proper authority. So it is something that has been laid down, that has been ordained. Ordained मतलब ordained किसी proper authority ने बोला है या फिर established. लेकिन इसके 3 checks क्या हैं? It must always be just. It must always ensure fair play. And when we say convenience मतलब policy making में possible होना चाहिए. Right? Now if we try to differentiate between law and moral, laws are of course made by parliament, formal institution, whereas morals are made by society. So law is what is. Law actual में ये है, whereas morality could be what ought to be. What you think ought to be, that is what is morality. Most important, law will only judge you on your external actions. आप मन ही मन सोच रहे हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं किसी के बारे में, morally you can be judged but not legally, right? Inside your head you want to kill someone. You're like, this person, I want to give them one tight slap. But legally, unless you take some action, you will not be liable. Law is universal. सबके लिए law same है. But morality will change. Morality changes from time to time. Morality changes from society to society. And morality changes from individual to individual as well. For example, I've given 3 examples. For example, polygamy. Polygamy means married to more than one person. So for some people that may be acceptable, some people that may not be, but the law says that bigamy is illegal. Homosexuality, abortion. Again, आपके morals आपको शायद different views दें. Someone may be pro-choice कि जो person pregnant है उनकी मर्जी है. Someone may be pro-life.
कि अगर भगवान ने लाइफ दी है तो सिर्फ भगवान ही लाइफ ले सकते हैं, बट द लॉ, ओके, सो जस्ट आई वांट टू नो, इज अबॉर्शन लीगल इन इंडिया? How can you just raise your hands? How many say that abortion is legal in India? And how many say illegal? नहीं, आपको एक में तो हाथ उठाना ही है ना. So I'll ask once again. How many say illegal? Okay, and how many say legal? Exactly. So it is actually legal. Abortion is legal in India. तो जो आप सब बहुत कॉन्फिडेंटली बोले इट्स इलीगल, यू आर रॉन्ग. इफ आई मे प्लीज करेक्ट यू. आई विल गिव यू सम डिटेल्स, सो आई डिस्कस दैट ब्रीफली इन माई पीपीटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस एंड लॉ, प्लीज जस्ट लुक एट दिस वन स्टेटमेंट, राइट? ये एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे यूएसए में, एंड ही वाज टेलिंग समवन, ही सेड दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो हम बोलते हैं जस्टिस सिस्टम, बट हमारी कोर्ट्स में जो लॉ है वो चलेगा. इट माइट हैपन, मे हैपन इन सम इंस्टेंसेस कि उसकी वजह से जस्टिस नहीं मिल रही, बट वॉट इज फॉलोड इज द लॉ, राइट? इफ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ जस्टिसेस दैट आर देयर, कैन वी से देयर इज समथिंग नोन एज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. रेट्रीब्यूशन बेसिकली मतलब होता है बदला लेना. सो you killed my brother, so I will kill your brother, right? Not I will kill you, I will kill your brother. That is retribution. But what did Gandhi say? An eye for an eye will make the whole world blind. So Gandhi said an eye for an eye will make the whole world blind. So retributive justice is not appreciated. बदला लेने की भावना हमारे लीगल सिस्टम में, हमारे जस्टिस सिस्टम में अप्रिशिएट नहीं की जाती. There is distributive justice, मतलब कि अगर कुछ है, राइट, सब लोगों में जितना इक्वली डिवाइड हो सकता है वो होए. एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कुड बी द रिजर्वेशन सिस्टम दैट इज देयर. सो पीपल हु परहैप्स डोंट हैव एक्सेस टू नॉलेज ट्रेडिशनली नाउ कैन हैव एक्सेस टू नॉलेज. रेस्टोरेटिव जस्टिस, रेस्टोरेटिव जस्टिस का बेसिक मतलब होता है कि टू रिस्टोर दैट पर्सन टू देयर ओरिजिनल सेंस. तो जैसे वो पहले थे, बिफोर द क्राइम हैपेंड विद देम, you bring them back to that. Procedural justice, very very important. अगर आप कभी भी क्रिमिनल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में पढ़ते हैं, you must get a fair trial, right? Judge should not know either of the parties. If you are arrested, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए. If you're a woman, you cannot be arrested after 6 p.m. So procedural justice must be followed. Right? So I hope you are all aware. I can see some surprised faces. If you are a female, you cannot be arrested after sunset. Okay. Social justice. Social justice basically says that on different facets, but अगले मॉर्निंग में आएंगे आपको अरेस्ट करने. ठीक है? ऐसा नहीं कि रात गई बात गई, वो सुबह आके अरेस्ट करेंगे. ठीक है? तो social justice again is a combination of all these things. Environmental justice, very very important for all of you, and I want to understand, have you heard this word anti-natalist? What does the word anti-natalist mean? Someone said yes. Natal का मतलब क्या होता है? NATAL. So anti-natalist is someone who thinks that they should not have children. Right? You're against having children. Now anti-natalist could be for many reasons. So environment से relate करें, कुछ लोग कहते हैं कि environment पे burden पड़ेगा, already इतनी population है, और बच्चे होंगे तो environment पे और burden पड़ेगा. And कुछ लोग होते हैं like myself जो कहते हैं कि इस environment में बच्चों को लाके क्या फ़ायदा, right? The air is bad, the water is bad, employment is at an all-time low, crime is increasing, मतलब कुछ अच्छा बचा ही नहीं है. एंड जो भी बचा है दैट विद सोशल मीडिया विल गो अवे. ओके. इकोनॉमिक जस्टिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ensuring that there is distribution of resources. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि कंपटीशन, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, राइट? Yes, please. On the left side, those boys. Stop talking. Okay, economic justice would also mean
कि अगर देर इज एनी असेंशियल कमोडिटी, उसका प्राइस एक सीलिंग से बढ़ना नहीं चाहिए, राइट? सो देयर इज एन असेंशियल कमोडिटीज एक्ट. आपको गाड़ी 20 करोड़ की बनानी है, बनाइए, लेकिन टमाटर का तो इतना ही रखिए दैट एवरीवन शुड बी एबल टू बाय इट, राइट? क्रिमिनल जस्टिस, अगेन ensuring that the criminal system does not behave with you in a biased manner. Criminal justice का example, you cannot be convicted for the same offense twice. Criminal justice का example, you cannot be expected to be a witness against yourself. Criminal justice का example, अगर आज से कुछ action crime बनाए तो उसका retrospective effect नहीं हो सकता, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आज से बोलते हैं दैट किलिंग चिकन्स इज इलीगल एंड यू विल बी पुट इन जेल. तो अब मैंने 2 दिन पहले चिकन मारा था तो उसके लिए आई कैन नॉट बी पुट इन जेल. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. करेक्टिव जस्टिस विच वी मोस्टली फॉलो, आई हैड अ फोन, यू ब्रोक माई फोन, फोन 50,000 का था तो 50,000 तो फोन के दो एंड 50,000 मेंटल हरासमेंट के. अब उस फ़ोन में मेरी सारी फोटोज़ थी, मेरा सब कुछ था, लॉगिन था, राइट? ऑफ कोर्स माई स्टूडेंट वेंट टू वॉच मूवी इन अ PVR एंड अ रैट बिट हिम. तो नाउ ही इज़ गॉन टू द कंज्यूमर फोरम एंड आस्क्ड फॉर 70,000 रुपीज़ कि एक तो रैट बाइट हुआ, और अब जब भी मैं मूवी देखने अंधेरे में बैठूंगा मुझे यही लगता रहेगा कि कहाँ से चूहा आएगा, है ना? सो we'll study, there are cases, Zomato and McDonald's पे 1 lakh rupees का फाइन लगा because they served non-vegetarian food to a customer who was pure vegetarian. So there are such cases and corrective justice होना भी चाहिए. That's how we move forward in society. So now it's not just your physical torture or physical harassment, but also your mental harassment that should be accounted for. Global justice, I'll skip, all this and okay. So what I'm basically going to do right now is I'm going to tell you about different types of laws that are there, give you examples. If you feel कि कुछ interesting है तो बता देना, I'll tell more. If you feel कि नहीं, so with your expressions tell me मैम आगे बढ़िए. Okay? So first, Indian Penal Code. So IPC basically क्या बताता है? It tells you all the actions which are crime and it tells you उसके लिए क्या punishment मिलेगी, ठीक है? So it will tell you कि theft क्या है. Like for example, there is a question, suppose मैंने किसी के घर से कोई बुक उठाई और उन्हीं के घर में कहीं और छुपा दी. So is that theft or not? Yes, that is theft, because theft means taking out of possession with dishonest intention. तो मैंने एक बार तो dishonest intention से निकाल ली and then I have put it elsewhere, that is also theft, right? What is murder? What is culpable homicide amounting to murder? एक चीज़ है कि मैंने उस बंदे को इतना पीटा कि वो मर गया. एक चीज़ है कि मुझे पता था कि उसको ब्रेन इंजरी है तो अगर मैं यहाँ मारूंगी तो वो पक्का एक ही बार में जाएगा. थर्ड चीज़ है कि मुझे नहीं पता था ब्रेन इंजरी है, मैं तो नॉर्मल मार रही थी, बट ब्रेन इंजरी थी तो बेचारा गया, राइट? सो तीनों में अलग अलग टाइप का क्राइम होगा. Crimes against women, stalking is a crime, right? Voyeurism is a crime. Against the decency of a woman, insulting the decency of a woman is a crime. What is voyeurism? Anyone knows? So voyeurism is basically, if you've heard of cases malls में जहाँ पे security changing rooms में they'll put cameras. Or in hotels there are cameras. So voyeurism is if you're taking the video of any woman without her knowledge in a space where she will not expect it. So maybe metro में वीडियो ले रहे हो, अब कोई लड़ाई हो रही है मेट्रो में वीडियो ले रहे हो, वो अलग है. बट इफ़ यू आर टेकिंग, अगर वो अपने रूम में है, वो कहीं भी है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगी, राइट? अ पब्लिक वॉशरूम. सो वॉयरिज्म. अब इसमें 2 कैच है, ठीक है? पहली बात तो इट्स ओनली अगेंस्ट वुमेन. So if I take a boy's video, unfortunately the boys have no legal recourse. Second is also that if a woman is taking a woman's video, so if I take a girl's video, then the girl also has no recourse against me. So इसमें victim can only be woman and perpetrator can only be man. इस law के हिसाब से अब वो change होगा धीरे धीरे, तो we'll see. तो Indian Penal Code will tell you different examples. What is fraud?
what is criminal misrepresentation, what is hurt, what is grievous hurt, ये different examples मिलते हैं. इसमें दो चीज़ें और होती है, एक important चीज़ है छोटी सी, there has to be action and there has to be intention. Both of them have to be there. ठीक है. अब for example, I poison you with the intention of poisoning you. तो मैंने एक्शन भी किया और इंटेंशन भी था. आई पॉइजन यू लेकिन आप वो खाते नहीं हो, तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो बना, एक्शन मतलब इंटेंशन तो था, वो एक्शन कल्मिनेट नहीं हुआ. और मैंने आपको कुछ खिलाया जिसमें सपोज आई गिव यू पीनट्स, आई डिडंट नो यू हैव अ पीनट एलर्जी. ठीक है, तो इसमें एक्शन है लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं है. राइट, सो ऑल थ्री विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. अब आईपीसी तो बताता है क्या गलत है, उसकी कितनी पनिशमेंट मिलेगी. सीआरपीसी बताता है कि कौन सी कोर्ट में जाना है, कैसे जाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा, आपको अरेस्ट कब कर सकते हैं, आपको बेल कब मिलेगी. सो इफ़ यू हर्ड ऑफ दिस ना, एंटिसिपेटरी बेल सुना है न्यूज़ में. मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और उसमें मेरा नाम आने वाला है. आई एम नॉट इन्वॉल्व, बट मुझे पता है मेरे को पुलिस ले जाएगी, तो मैं पहले से एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करती हूँ. वरना समथिंग इज हैपेंड, दिव टेकन मी टू कोर्ट एंड आई हैव अप्लाइड फॉर बेल. अब बेल में ना बहुत जुडिशरी में प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम क्या होता है, पीपल जजेस को डर लगता है बेल देने में कि भाई बंदा जाके आगे कुछ गड़बड़ कर दिया, राइट, वॉट इफ ही गोज एंड डज समथिंग रॉन्ग. बट बेल इज द राइट. सो बेल इज राइट एंड नॉट ग्रांटिंग बेल इज एक्सेप्शन. सो ये सब है कोड इसमें, राइट, इट टेल्स यू द प्रोसीजर. इंडियन एविडेंस एक्ट. अब एविडेंस एक्ट आपको बताएगा, सी देयर इज अ सेइंग, पीपल में लाई बट डॉक्यूमेंट्स डू नॉट. तो कोर्ट में मैं जो बोलूँगी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप चैट दिखा दूँ और उसको ऑथेंटिकेट करके, एनी वे वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्क्रीन शॉट. सो इफ़ यू एवर हैव टू सबमिट एनी काइंड ऑफ एनी ईमेल, एनी व्हाट्सएप चैट, एनीथिंग ऑन फेसबुक, पहले आपको कोर्ट में जाके उसको ऑथेंटिकेट कराना होता है कि भाई ये गलत, हमने कुछ नहीं डाला. सो बेस्ड ऑन दैट देन देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉस्पिटल बेड पे हूँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, और मैं बोलती हूँ कि XYZ पर्सन हैज़ किल्ड मी. ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान मरने वाला है तो उसके पास झूठ बोलने का रीज़न नहीं होता है, तो दैट विल बी वन एडेड प्रूफ. सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं होगा, बट दैट इज वन एडेड प्रूफ. सो एविडेंस एक्ट टेल्स यू अबाउट what all kinds of evidence can be accepted, how to gather that evidence, how to do forensics and such other things. Then you have code of civil procedure. सिविल प्रोसीजर में क्या बताएगा, ये बताएगा कि कोर्ट के पास कैसे जाना है जब आपका सिविल केस हो. नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरा 5 लाख रुपए का केस है, ठीक है, एंड इनका 5 करोड़ रुपए का केस है, तो क्या हम दोनों जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? सो एवरी हाई कोर्ट विल हैव अ लिमिट कि भाई अच्छा, अगर आपके केस की वैल्यू 2 करोड़ 5 करोड़ इससे ऊपर की है तो आप सीधा हाई कोर्ट के पास आओ, राइट. सो डिफरेंट सिविल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन दिस. मोटर व्हीकल एक्ट, आई होप यू ऑल नो, आप लोगों को आई होप रोका नहीं है कभी पुलिस ने, आपने कुछ गड़बड़ नहीं की, बट इफ़ यू हैव बिन स्टॉप्ड, मोटर व्हीकल रूल्स बेसिकली हर स्टेट में बताते हैं व्हाट विल बी द फाइन. नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें ना सपोज हिट एंड रन हुआ है, ठीक है, यू किल्ड समवन, नाउ यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन. तो कोर्ट कॉम्पनसेशन डिसाइड करता है. अब कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि मेरी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, या किसी और की वैल्यू? तो इसके लिए दे हैव मेड अ सिस्टम. पहली बात तो व्हाट वाज द एज. सपोज आई वाज 30 years old, तो अभी तो मेरी प्राइम एज थी, मैं अभी कमा रही थी, राइट, आई वुड हैव अर्न फॉर माई फैमिली. वेरएज अगर कोई 60 साल का है तो वो शायद ऑलरेडी काम छोड़ चुके हों. हाउ क्वालिफाइड आई was I the only earning member in my family? How many people are earning? मेरी फैमिली का स्टेटस क्या है? एंड मैनी सच फैक्टर्स आर टेकन. उसके बाद कॉम्पनसेशन डिसाइड होता है. तो बीच में ये हुआ था कि अगर कोई हाउसवाइफ मर जाती है तो अब उसमें आप कैसे दिखाओगे कि शी वॉज वर्किंग. तो कोर्ट ने कहा नहीं, हाउसवाइफ इज ऑल्सो डूइंग सो मच ऑफ अनपेड वर्क, सो दैट विल ऑल्सो बी अकाउंटेड फॉर, एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड कॉम्पनसेशन इन हिट एंड रन केसेस.
नाउ देयर इज समथिंग नोन एज लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट का क्या मतलब है? मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक खाली प्लॉट है, उस प्लॉट पे कुछ लोग आए और वो रहने लग गए. मुझे दिख रहा है कि वो रह रहे हैं, उन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं की है, उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली है. अब 15 साल बाद मुझे याद आ रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, इनको भगाओ. लिमिटेशन एक्ट सेज कि जब कुछ आपके साथ गलत हुआ है, यू कैन नॉट स्लीप ऑन योर राइट्स. आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल, हर उसके लिए अलग है, उसी में आपको कोर्ट के पास आना होगा. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सम क्रिमिनल केसेस, उसमें लिमिटेशन नहीं होती. अदरवाइज देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन कि आपको इसी टाइम पीरियड में कोर्ट के पास आना है. देयर इज ऑल्सो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट. व्हाट इज रेन्यूमरेशन? सैलरी. सो क्या इंडिया में सैलरी इक्वल है मेन एंड वुमेन की? नो. बिकॉज आई कैन टेल यू इन academics we are doing okay. Academics it's more or less equal. But you are right. In 2022 अगर सिर्फ लेबर की बात करें तो women laborers were getting 44% less. Right? So there is this saying equal wage for equal work. So India में भी equal remuneration act है. Now I am just telling you what are some of the reasons why there is this gap, right? One is women may usually take lower paying occupations. I want to give you personally the biggest example of this. अभी लॉ स्कूल में क्या ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं. 70 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 30 मेल स्टूडेंट्स हैं लॉ स्कूल्स में. ठीक है, बट स्टिल ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देर इज गुड रेशियो ऑफ women. But as you go to the high court, as you go to the Supreme Court, you don't see women judges only, right? Cooking is one thing ना. Cooking तो बोलते हैं कि traditionally that women do the cooking, but until 5 years back all the top cooks in the country were all male cooks, right? So you had Sanjeev Khanna, you had all these people, you had very few female cooks. So in every field that you will see, for some reason, and that we have to find out the reason, that जितना ऊपर ऊपर जाते हैं you will see less women. But it says, Equal Remuneration Act says that equal remuneration must be given for equal work और similar work हो तो भी equal pay आपको देना है. नहीं दे दे तो 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है. Someone goes and reports that this is a practice and they can establish it. Okay, next. Can someone tell me what is maternity benefit? We've heard about it. कोई भी कुछ भी एक आध word, anything that comes to your mind. Can I say it's paid leave? Right? So if I am working somewhere and I get pregnant, so I will get some days of paid leave. Right? India में is there any law for maternity benefit? Maternity benefit मिलता है? Yes. अच्छा, paternity benefit मिलता है? Yes. Not compulsory, but if I want, like if a father wants, they can take paternity benefit. Okay, okay, correct, you're on the right way. So 26 weeks, right? 6.5 महीने आपको paid leave मिलती है if you're pregnant, if you're working somewhere, right? It's also mentioned every institution जहाँ पे 10 या more than 10 women are working should have a crèche facility. Can you be taken out of your job for being pregnant? No. So if you know anyone, right, it could be anyone who's working in your home also. If you know anyone who they got pregnant and then they were told to leave their job, they can go to the court and they can file a case. So I think 66 weeks before the due date, and then उसके बाद जितना भी है, women can take maternity leave. So there are many other schemes also. These are just some government schemes that are available. Thank you so much. So yes, India also has paternity leave and
पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिलती है, राइट? बट सम women say कि that 15 दिन is also not okay because then women have to take care of the baby and the husband both, right? So the husband is not helping. वो दोनों, you know, maybe I know that men today are not like that, but I'm talking of our previous generation, okay? All right. Okay, so this is the question which I had asked you. Is it legal to have abortion? Almost everywhere I go, people say no, but it is legal to have abortion with some conditions someone had mentioned, and that is given in the MTP Act, Medical Termination of Pregnancy Act. Okay, so please you can have a look. Basically 0 to 12 weeks, you just have to go and say that you want an abortion and that's it. 12 to 20 weeks में क्या होता है? There has to be some reason. So reason can be that either it will hurt your physical health, लेकिन 12 to 20 weeks में A का second line पढ़िए, injury to her physical or mental health. So if I am not ready to have a child, it will hurt my mental health, right? So even here you come under this. Now 20 weeks से above, why it's not generally allowed is because then it becomes, it's a risk for the pregnant woman, right? So there are certain checks and balances which are there. लेकिन if you're a survivor of rape, if you're a minor, या फिर कोई women को disability है या पक्का है कि वो बच्चे को कोई abnormality होगा, in that case, with 2 practitioners saying yes, you can go through with it. Now, I have a couple of questions. Do you need consent of the parents before getting this abortion if you're above 18? Yes. Do you need consent of the husband? Yes. Okay. The parents do not have a say as per the law, and the husband also does not have a say. So there are Supreme Court judgments which have said कि husband का consent नहीं चाहिए for a woman to abort her baby if you are above 18, right? But of course, morally how it should be, that can be a discussion. Because अगर husband का consent नहीं लेंगे, तो what about the man's right to family? The man also has a right to family. So, you know, that is a discussion to be had. Doctor, because, you know, a lot of people get scared, this happens to a lot of people. Doctor cannot reveal your name or your identity to anyone. Because a lot of doctors, we've heard of cases, you know, they'll say कि आपके parents को phone करेंगे and so on. If any doctor reveals your identity to a third person, they can be sent to jail, right? There has to be confidentiality. So moving from here, I am now just talking about different aspects of law, right? So another thing which is really coming up is air and space law. ये जो image देख रहे हैं ना, this is space debris. So debris is what? DEBRIS, like waste basically. तो अगर कुछ भी कोई भी rocket जाता है, so you've seen कि एक part disconnect हो जाता है after it passes one layer. You've seen that in movies also. So there is a lot of debris. मतलब इतनी satellites है अब तो, इतने सारे random parts that are just flying around. So we have to understand how to get rid of that. There is also privatization of space. So who's one person we all know who's doing this in the private sector? Elon Musk. But अब बहुत सारी ऐसी you know organizations हैं who are engaging and they're actually asking you to invest money, and they're saying by 2030 or by 2035, you know, we can go as tourists to the moon. Okay, I'll just keep it low for a minute. So air and space law, there is lots to be discussed, lots of work to be done in terms of policy.
becomes even more important क्योंकि इसमें international players are involved. You must have also heard there are now satellites who are coming. They are saying कि आप solar panels लगाओ, आप जिस टाइम पे बोलोगे हम सैटेलाइट को ऐसे मूव करेंगे कि सन की रिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया पे गिरे एंड यू कैन हैव रिन्यूएबल एनर्जी. प्लीज रीड अबाउट इट, राइट? लाइक दे आर एक्चुअली डूइंग इट. Another thing is sports law. So sports law mein you can see I have put 3 pictures. So one very important thing in sports law is of course like you know how you disqualify people. So there's doping. So if you know Punya, he is banned for 4 years and he cannot even coach anyone because he failed his doping test. Second picture which you can see, which is actually a very relevant study right now, is transgender persons in sports. So now what is happening? There is a man who has now become a trans woman. So now they are playing the women's sport. लेकिन उनमें जो टेस्टोस्टेरोन है, जो बेसिक मसल बिल्ड है, वो मैन का है. So they are defeating women मतलब by a very large margin. And you know the sporting community is calling it unfair. That how can you know do that? So that is also a very important policy discussion that's happening right now. And third I have mentioned is contracts, right? So if you all, अगर कोई football follow करता है, you must have seen, right? They have these big contracts. Some club signs someone for 10 million. So all the contracts that are made in sports are also done by lawyers. In fact, I want to just add one thing, entertainment industry. Entertainment industry में भी बहुत lawyers की ज़रूरत है क्योंकि प्रोड्यूसर एक्टर सबका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, राइट? प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. म्यूज़िक के कॉपीराइट इश्यूज है तो आप म्यूज़िक का कॉपीराइट ले रहे हो, आप अपनी स्क्रिप्ट का कॉपीराइट ले रहे हो एंड सो ऑन. ओके, नाउ आई होप कैन यू ऑल रीड व्हाट्स रिटन? नो? जो नहीं पढ़ पा रहा वो आगे आ जाए, ठीक है? ओके, सो now let's talk about RTE Act. You must have heard about RTE. RTE Act basically क्या कहता है? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि आप 14 पे उस बच्चे को छोड़ रहे हो, उसके आगे का क्या? और आप 6 से शुरू कर रहे हो तो जो प्लीज एक्सक्यूज मी, जो बाकी बच्चे प्री नर्सरी कर आए, you know, how will this kid compete with them? इसमें I want to show you just 2 sections. Section 13 क्या कहता है? No capitation fee and screening procedure, right? But look at what I've written. Hyderabad में 7 lakh rupees capitation fees. Then another one only in Hyderabad, 2 lakh rupees. So even at nursery level, literally in big cities at nursery level also they are taking capitation fee, big amount of capitation fee. Then it's written no screening. लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा है? Schools are holding entrance test for class 1 seat. मतलब I don't know about you, class 1 में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि है क्या, right? What is happening? But it's clearly written you cannot have screening. Screening is happening. Clearly written no capitation fee. Capitation fee is happening. Now there's one very interesting section in RTE, section 12(1) and particularly 12(1)(c). Section 12 क्या कहता है? 25% of seats from class 1 onwards have to be for students who are economically weak. And वो किस किस को कह रहा है? वो कह रहा है अगर आप प्राइवेट हो तो भी आपको 25% सीट्स रखना है. आप गवर्नमेंट हो तो रखना ही है. Even private schools have to keep 25% seats. ये जो, if you can read, shall admit in class 1 at least 25% of the strength children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighborhood and provide free and compulsory education. अब जो स्कूल वाला है वो कह रहा है what about my right to business? मैं 25 सीट फ्री में छोड़ दूँ, उन बच्चों को ऊपर से यूनिफॉर्म दूँ, कपड़े, आई गिव देम बैग्स, आई गिव देम बुक्स, सो व्हाट अबाउट माय राइट टू बिजनेस? बट क्लियरली इसमें लिखा है दैट एवरी सिंगल स्कूल हैज़ टू डू दिस. एंड
people who are involved are very proactively following up on it. There is insurance law, right? Different types of insurances are there. There is income tax law. There is refugee law. अभी recently हमारे आसपास कहाँ refugee crisis हुआ था, मतलब हाँ बांग्लादेश से कौन आया था बांग्लादेश से? What's the word of the group I'm looking for? It's from R. हाँ loudly. सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं. Rohingyas, yes. So it's the Rohingya group who had come here, right? Real estate law. Real estate law में बहुत बड़ा problem है. I don't know about here, but I was in अहमदाबाद. अहमदाबाद में ऐसे buildings बन रही हैं, पता नहीं उनमें रहेगा कौन, but in every city they are making buildings. Now what happens is I want to buy a flat. Some, you know, Emaar only, I'll take example. Emaar India has come to me, said कि 1 करोड़ का फ्लैट है, 75 lakhs अभी दो, 25 lakhs on possession. या लेट्स से वो कहते हैं कि 50 लाख अभी दो, 50 on possession. एंड वो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि 2026 में पोजेशन मिल जाएगा. अब 2028 हो गई, मुझे पोजेशन ही नहीं मिल रहा, मेरा 50 लाख भी अटका हुआ है. ऑल ऑफ अ सडन दे से भाई वी आर बैंक करप्ट, वी डोंट हैव मनी, आप अपने 50 लाख वापस लो. लेकिन मेरे उस 50 लाख रुपए पे इतना इंटरेस्ट भी तो दो मुझे. सो मेनी टाइम्स पोजेशन ही नहीं मिलती. या फिर अगर वो कहते हैं पैसे वापस लो तो दे आर सेइंग कि ठीक है 50 का 52 देंगे बट इंटरेस्ट नहीं देंगे. सो यू गो टू कोर्ट. So this example I have given, that Haryana RERA, so RERA is the platform. They directed some company to pay interest to home buyer for Emerald Hills floor project. Very, very interesting. Medical law and media law. These are two different things. Now medical law में ना 2-3 अलग चीज़ें हैं. First, I would say is cases of medical negligence. राइट. सो देर आर सो मेनी केसेस. सबसे नीचे वाला पढ़ो, राजस्थान में न्यूरोसर्जन ऑफ फोर्टिस हैव पेड 50 लाख रुपीज इन कॉम्पनसेशन. और बीच वाला पढ़ो, एक सर्जन है, उसने कैटरैक्ट का किसी का ऑपरेशन किया, पोस्ट ऑपरेशन केयर में कुछ गड़बड़ हो गई, सो दैट पर्सन लॉस्ट देयर विजन, उनको 3.5 लाख रुपए मिल रहा है. राइट. सो नाउ मेडिकल नेग्लिजेंस इज कमिंग इन अ वेरी वेरी बिग वे. सो इफ देयर इज एनीथिंग, पहले लिटरली ऐसा होता था कि गलत डायग्नोसिस कर दिया, गलत पैर में ऑपरेशन कर दिया, ऐसा सुना है कि हाँ मतलब हम सिर्फ पढ़ते हैं, इट्स नॉट अ जोक, इट हैज़ हैपेंड. या फिर कुछ ऐसा छोड़ दिया बॉडी में, कुछ इन्फेक्शन हो गया एंड पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स. नाउ मेडिकल नेग्लिजेंस के बहुत केस हैं. तो पहले तो क्या हो रहा था कि डॉक्टर्स हैड ऑल द पावर, बेचारे पेशेंट. अब स्विच हो गया है, अब पेशेंट्स आर नाउ सबसे ऊपर, पेशेंट्स आर कमिंग एंड स्टैबिंग. इट्स हैपनिंग. वो डॉक्टर्स को, पीपल आर मिसट्रीटिंग डॉक्टर्स. कुछ अगर अच्छे से, अब वो कोई ठीक नहीं हुआ पेशेंट, दे आर गोइंग एंड स्लैपिंग देम. वो ब्रेकिंग न्यूज में, डॉक्टर अटैक्ड विद अ मशेटी इन नासिक. सो इमेजिन यू आर डूइंग योर जॉब एंड आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल. माई ब्रदर्स फ्रेंड, माई ब्रदर वॉज स्टडिंग इन उत्तराखंड में उनकी कोई सीनियर थी, उसकी पोस्टिंग बहुत ही रूरल, बहुत ही ऊपर हुई थी. नाउ वन चाइल्ड हैड कम, 5-year-old child, whose entire face had been mauled by a bear, right? Some wild bear. तो पता था कि वो बच्चा नहीं बचेगा ना, but they took that child. So of course nothing could happen to that child ना, but the entire family of that child came and beat up that doctor. So there has to be a balance between these two things, right? Now they are very seriously coming up, kid, you know, they want a act to protect doctors. Next, media law. Now media, I think it's very, very relevant. Media law basically for me is how we understand media, how we relate to things. I hope you know there is concept of like, do you know what is confirmation bias or what is filter bubble? So filter bubble is very simple. Suppose something has come about Rahul Gandhi and I have liked it, okay? Or something has come about, tell me someone else. So about Arvind Kejriwal and I have written in comments, I support Kejriwal. तो मेरे को सारा
positive Congress and videos which are against or trolling BJP will come. Flip side में जो भी आप like करोगे तो वैसा वैसा आता जाएगा, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया यही देख रही है. So our timelines are so different, we don't understand it. Now in that context only I want to show you a very brief. So just two quotes that I heard which maybe may resonate with you. The first one is, it says that if you are not paying for a product, then you are the product, right? So that is precisely what's happening here. Another interesting statement which is often made, so there are only two industries which call their people users. One is the telecom industry, and one is the drug industry. So you have drug users and then you have social media users. Now the point is very simple which was being said here. First of all, how many of you have recently bought a newspaper, like a physical newspaper? या आप लोगों ने कभी भी 10 रुपये, 8 रुपये, 14 रुपये दे के न्यूज़पेपर खरीदा है? कब खरीदा था? I doubt it, right? So I have not. Point being, I have not. However, for any newspaper or news channel, please understand, they have their office in Bangalore. Something big has happened in a small town in Tripura. They have to reach there. Person has to reach, equipment has to reach ASAP. So they have to have all of that kind of network. So for that, what do they need? Money, right? For any newspaper, any media channel, you need a lot of money to operate. अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा एडवर्टाइजर से. सो टू थिंग्स, अब प्राइवेट एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर कहाँ एडवर्टाइज करेगा? जहाँ टीआरपी ज़्यादा होगी, राइट? इफ़ देयर इज सम शो नो वन वॉचेस, तो वहाँ पे उस टाइम एडवर्टाइज नहीं करेंगे. बिग बॉस सब देख रहे हैं, बिग बॉस के टाइम वो नीचे एडवर्टाइजमेंट के लिए दिल पे. दैट्स प्राइवेट एडवर्टाइजर. नाउ गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एडवर्टाइजर. एंड यू ऑल मस्ट हैव सीन ऑल्सो ना, फुल पेज आता है गवर्नमेंट का, फुल पेज आगे, फुल पेज पीछे. एवरी टाइम दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ नोटिस, सम काइंड ऑफ जॉब एप्लीकेशंस दैट हैव कम. नाउ इफ आई राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, व्हाई विल द गवर्नमेंट एडवर्टाइज विद मी? गवर्नमेंट विल ब्लैक लिस्ट मी. दिल से हम तुम्हारे को एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, तुम तो हमारे को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो. सो यू कांट राइट फ्रीली, यू हैव टू राइट समथिंग दैट विल नॉट हर्ट देम, राइट? सेम विद न्यूज़. अगर आप गलत न्यूज़ दिखाओगे तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग स्पेस लेगा ही नहीं. गवर्नमेंट नहीं लेगा तो गवर्नमेंट के फ्रेंड्स भी नहीं लेंगे. सो दीज आर द मॉनेटरी इशूज दैट आर इन्वॉल्व इन मीडिया लॉ. You of course have international law. I hope we all understand international law. Very small example. You are an Indian. You go to Canada to study. You meet an Italian man there. You both finish your studies, move to Russia and get married there. So कौन सा domestic law apply होगा, right? So many things are happening on the daily. Private international law is thriving. अगर एक कोई इटालियन कंपनी है, वो इटली में रजिस्टर्ड है, एंड यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, अब बीच में डैमेज हो गए प्रोडक्ट्स, तो जो कॉम्पनसेशन देनी है वो इटली का लॉ डिसाइड करेगा या इंडियन लॉ डिसाइड करेगा. नेक्स्ट थिंग इज ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. हैव यू हर्ड अबाउट ADR? एनीथिंग? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, कोर्ट्स में बहुत पेंडेंसी है, कोर्ट में केस चल रहा है. सिविल केस का एवरेज ड्यूरेशन इन अ कोर्ट विल भी अच्छा खासा 10 साल, 8 से 10 साल, राइट? कम से कम चलता है. देर आर इंस्टेंसेज वेयर अ पर्सन हैज डाइड, नाउ हिज चिल्ड्रन और हिज ग्रैंड चिल्ड्रन आर फाइटिंग द केस. तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोर्ट के सिवाय डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करें. सो दे डिड लोक अदालत. लोक अदालत तो सुना है हमने, लोक अदालत बीच में होते रहते हैं फॉर स्मॉल थिंग्स. सो देर विल बी लोक अदालत की किसी के भी चालान है, मोटर व्हीकल चालान है, उसके लिए. देयर विल बी लोक अदालत की आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके लिए लोक अदालत है, जिसके बिल है वो आ जाओ. देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज मीडिएशन. मीडिएशन में एक मीडिएटर होता है. मीडिएटर इज लाइक रेफरी इन अ फुटबॉल मैच. सो ही विल नेवर टच द बॉल, राइट? द रेफरी विल नेवर टच द बॉल,
Players are only playing, but he will ensure that rules are followed. अब मीडिएशन कहाँ फॉलो होता है? दो चीज़ों में. पहले मैट्रिमोनियल केसेस. मोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में फाइट क्या होती है कि ठीक है अब शादी इकट्ठे नहीं रहना, लेकिन कौन किसको पैसा देगा, राइट? हाउ मच मनी विल यू गिव, स्पेशली अगर फर्स्ट 2-3 years में यू आर गेटिंग अ डिवोर्स, तो शादी में जो खर्चा किया है वो वापस दीजिए, ये वो. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट एंड फाइटिंग, बेटर सिट, डिसाइड कि कितना पैसा किसको देना है, एंड देन गो फॉर म्यूचुअल डिवोर्स. या फिर चेक बाउंस का केस. अब मैंने आपसे 20 लाख रुपए ले लिए हैं, मैं कहीं से पोजीशन में ही नहीं हूँ, मैंने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया. आपको भी पता है मैं 20 लाख नहीं दे सकती, तो वी विल सिट. आई से अच्छा आप 10 लाख अभी ले लो, 10 लाख 6 महीने बाद. और आई से आप 5 लाख अभी ले लो, 15 लाख 1 साल बाद, लेकिन मतलब इस पूरे साल में मैं आपको इंटरेस्ट देती रहूँगी. So in these two cases, we can come to a mutual discussion and we can decide what we want to do. Conciliation क्या होता है? Conciliation is same as mediation. Conciliation follow होता है इंडस्ट्रीज में. तो conciliation थोड़ा पंचायत टाइप आप समझ लीजिए कि भाई people have gone on strike and management is not listening. तो they bring in a person जो दोनों जिसकी बात मान लेंगे और वो दोनों की सुनता और कहते हैं कि नहीं, you have to work. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडस्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट. कोई भी इंडस्ट्री अगर वो बंद हो गई, इट विल हार्म द नेशनल इंटरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट इज आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन इज बूमिंग. अभी आर्बिट्रेशन ही होता है. रिलायंस का 50,000 करोड़ का केस है. अब वो कोर्ट में 10 साल के बाद जीत भी गए तो क्या ही जीते, वो 50,000 करोड़ का 10 साल का इंटरेस्ट सोच लीजिए. सो यू गो फॉर आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में क्या होगा? आर्बिट्रेटर बैठा है, इट्स लाइक अ कोर्ट ओनली, लेकिन प्रोसीजर कम है. हम दोनों अग्री करेंगे कि अच्छा तीसरा बंदा है, ये बंदा जो कहेगा हम दोनों अपॉइंट करेंगे उसको, दोनों सहमत होंगे ये बंदा जो कहेगा वी विल डू दैट. सो दीज आर ऑल ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये सुना है हमने, ये वर्ड्स सुने हैं, राइट? सो बिस्लेरी, बिल्सेरी, बेल्सरी, ब्रिस्ली, है ना, ये सब इधर है. एरिडास, एबिबास. यू विल सी एयर जॉर्डन्स, बट वो एयर जॉर्डन का साइन कुछ और ही है ना. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, दिस स्टारबक्स एंड सरदार बख्श कॉफी. सो दीज आर ऑल बेसिकली ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स. आप क्या कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू फूल द कंज्यूमर. सो मैंने गुडविल बनाई है, मेरी कंपनी है स्टारबक्स, मैंने इतनी गुडविल बनाई, नाउ यू आर कमिंग एंड जिसको नहीं पता स्टारबक्स वो तुमसे चीज़ें खरीद रहा है. सो यू आर डूइंग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट है मैंने कोई गाना बनाया, ठीक है, मैंने गाया, या मैं प्रोड्यूसर हूँ, गाना हिट हो गया, वायरल हो गया, नाउ एवरीवन इज मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स ऑन इट, बट मुझे तो कुछ पैसा मिले, मुझे कहीं से तो रॉयल्टी मिले. माई सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन टू आफ्टर 10 years ऑल्सो. सो आई विल हैव कॉपीराइट ऑन माई म्यूजिक, सो आई विल गेट रॉयल्टी, मुझे पैसा मिलेगा. बुक्स है, जब भी बुक्स खरीदी जाएंगी तो ऑथर को कुछ पैसा तो मिलेगा. पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट? वी हैव साइंस स्टूडेंट्स हियर, इफ यू नो पेटेंट. Very good. What's your name? Anushka. Anushka has given the correct answer. So patent is basically if there is any new invention, a technical invention that is there, so you can patent it. आपने कोई प्रोडक्ट, कोई भी स्टोन है या कोई भी मटेरियल है, उसका कोई नया यूज सोचा, और suppose someone who made prism for the first time could have patented the concept of a prism. So patent is more technical. एंड लास्ट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन. जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? एग्जाम्पल भी वहाँ लिखे हैं तो वो पढ़ के बता दीजिए क्या है. सो जोग्राफिकल इंडिकेशन आर प्रोडक्ट्स विच आर नोन फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मेड. तो जैसे मैसूर सिल्क, राइट, दार्जिलिंग टी हम बोलते हैं, दैट्स बिकॉज वो दार्जिलिंग में मिलती है, राइट. You have Alfonso mango, you have Coorg orange. Any other geographical indication?
Yes, ma'am, correct. So Patan Patola is also a geographical indication which tells you that Patan is the place where, these artisans are there who make it. Then, if you will see worldwide also, I'll just bring your notice to Champagne. So I hope you know Champagne is basically a place. It's a city. It's an area in France. तो अगर फ्रांस में उस शहर में शैम्पेन में स्पार्कलिंग वाइन बनती है तो इट्स कॉल्ड शैम्पेन. लेकिन अगर इंडिया में या कहीं भी बन रही है, so you'll call it sparkling wine, you'll actually not call it champagne. Right? So these are many such examples of geographical indications that are there. Right to Information Act, RTI Act. RTI Act brings transparency. These are the, the silly examples which I have put on the board. So someone filed an RTI कि MCD की officials कितना पान खाते हैं दिन में, ठीक है. Someone has filed an RTI for AMU कि प्लीज़ हमें बताइए कि क्वेश्चन पेपर कहाँ पे सेट होता है. But on a serious note, RTI can also now be filed online. So you can also file an RTI. RTI can be filed only या तो against public body, government body, या कोई ऐसी body who is doing government function. So basically you can find out information. So I am from GNLU, it's a government college. So you can actually write to GNLU कि आपके कितने faculties हैं, इनमें से कितने faculties permanent हैं, कितने contractual हैं. Any kind of question that you want to know that should be in the public domain, you can ask, but only from government entities. अभी recently political parties भी RTI के अंडर आई हैं. Now another problem which has happened, people have made RTI into a profession. Like there was a judge, he was criticizing, he said, लोग अपने visiting card पे लिखते हैं RTI activist. ये क्या मतलब है? मतलब आपको कुछ सवाल पूछना है तो कोई भी पूछे, ऐसे थोड़ी कि आप सोच सोच के दूसरों गवर्नमेंट बॉडी को परेशान करोगे. So people actually write RTI activist. RTI activists are also being killed for exposing. So just see the last one on the left. So many RTI activists, have been assaulted or have been killed. But this is something which is very important for our legal system, something that has brought in transparency into our legal system, and it actually exposes a lot of important things. Do we know anything about Consumer Protection Act? Please बताइए. Correct. So he's given an example. Please bear with me. He's saying that if a product is expired and it's still being sold, you can go to the consumer forum and you can complain and they will be fined. Now just look at my examples which I've given, right? So first example is Zomato and McDonald's fined 1 lakh for delivering non-vegetarian food to vegetarian customer. Recently 3-4 साल से trend हुआ है that they've started charging us for bags also. West side जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, they charge you for a paper bag. अगर पेपर बैग पे उनका लोगो है देन दे कैन नॉट चार्ज यू, क्योंकि वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. सो नाउ इफ दे चार्ज यू विल सी दे यूजुअली गिव यू लाइक अ ब्राउन बैग. तो बिग बाजार फाइन 12,000 फॉर चार्जिंग 2 कस्टमर्स 18 रुपीज फॉर कैरी बैग्स. वो सबसे ऊपर वाला, सो दैट्स दिस मैन, ही सेड, he basically went that Shah Rukh Khan was endorsing this fairness cream. He said, I believe Shah Rukh Khan and I bought 10 fairness creams. मतलब अलग अलग, एक ली ख़त्म करी, मेरे पास सारे बिल हैं, एक ली ख़त्म करी, दूसरी ली ख़त्म करी, ऐसे करके मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, but I have not seen any improvement, so I have been cheated. Fair point. And actually you'll see all these actors, they are endorsing like Fanta, Coca-Cola, वो लोग touch भी नहीं करते. And हम लोग, we're drinking by the gallon. We're drinking so much of it, but they don't touch it. They are endorsing chocolates, they are endorsing so many products that they'll never use. So, Emami was fined 15 lakh rupees for misleading unfair claims over fairness cream. Please, can you ask them to put the PPT only? Thank you. Okay.
POCSO, Prevention of Children from Sexual Offences Act. And okay, I have a question. If there is consent, is it still rape if it's consent? Like if there are supposed say two 17-year-old boy and girl and they engage in any sexual relationship, but दोनों की consent से हुआ है. So is that rape? Why? Correct. So for everyone's understanding, below 18 कुछ कंसेंट नहीं होता है. आपका कंसेंट का 18 से पहले कुछ वैल्यू नहीं है. सो इवन इफ इट्स कंसेंशुअल इट विल बी कंसिडर्ड रेप. सो व्हाट हैपेंस इज जब लड़का लड़की भाग जाते हैं 18 साल से पहले, सो पेरेंट्स गो एंड फाइल किडनैपिंग रिपोर्ट कि हमारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, राइट? So POCSO covers any sexual offences against children, be it boys or girls. Now, Juvenile Justice Act, please, it's a very important act. If a 6-year-old boy kills someone, तो उसको क्या सजा मिलेगी? Like उसको 6-year-old boy को वही सेम सजा मिलेगी जो 36-year-old मैन को मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? As per the IPC, below 7 years of age अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उनको कोई सजा नहीं मिलती. लेकिन अगर कोई उनसे क्राइम कमिट करवाता है तो उसको सजा मिलती है ना? बिकॉज आई कुड सी सम नॉटी स्माइल्स. सो यू कैन नॉट एंगेज इन दैट. बट 7 साल से पहले सजा नहीं मिलती. 7 से 10 साल के बीच में भी पहले वो लोग देखते हैं कि वेदर इस बच्चे ने जो गलती की है क्या उसको अंडरस्टैंडिंग थी, उसको समझ थी, एंड देन देव कमिटेड. सो नाउ जुवेनाइल जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. Juvenile Justice Act deals with 2 kinds of people. Please see on the red box. First, it deals with children who are in conflict with law. मतलब वो बच्चे जो गलत काम कर रहे हैं, who are offenders. तो बेसिकली क्या होता है, आप 18 से कम के हो तो आप जेल नहीं जाओगे, आप करेक्शन होम में जाओगे. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि जेल जाओगे, हार्डेंड क्रिमिनल से मिलोगे तो पक्का क्रिमिनल बन जाओगे. अभी हाँ, you will be meeting, you know, criminals over there. कोई बाबा संत थोड़ी बैठे हैं जेल में. So, because you are below 18, अभी स्कोप है, शायद आप इम्प्रूव कर जाओ, शायद आपने गलती से बचपने में वो मिस्टेक किया, तो they will send you to a correction home. Now, one important example of this is the Nirbhaya case. If you remember the 5th boy, he was sent to a correction home. फिर करेक्शन होम से जब आप 18 की उम्र के बाद निकलते हो, आपका नाम चेंज हो जाता है, आपको कहीं वो प्लेस कर देते हैं, एंड सो ऑन. सेकंड आर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. नाउ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कौन हुए? ऑर्फन चिल्ड्रन, अबैंडन्ड चिल्ड्रन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन. ऑर्फन पेरेंट्स नहीं है, अबैंडन रोड पे या कहीं छोड़ दिया है. सरेंडर एक चीज होता है जिसमें सपोज someone is very poor, they are saying we cannot take care of this child, we are giving the child to the government, आप ध्यान रखिए, right? So ये 2 लोगों के साथ JJ Act डील करता है. Next is, have we heard of POSH Act? POSH everyone has heard. Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013. It is known as POSH Act. Because of lack of time, otherwise I do an exercise where I try to understand what is your understanding of sexual harassment, and this is something that is very relevant to students your age. But sexual harassment will be any, of course, any physical advance, will be any demand for any sexual favors, will be any sexually colored remarks, you know, trying to show pornography, or absolutely any other conduct that is unwelcome. Anything that is unwelcome will be sexual harassment, right? It could be using demeaning words. It could, you know, be things that cause anger, that cause sadness in a person. Now, my question to you is, does intention matter?
Intention matters. But then suppose I say, you're looking very hot today, and then I say, मेरा intention तो compliment करने का था. मेरा intention आप, I didn't intend to say something bad. I intended to compliment you. I can get away ना. I'll say मेरा intention गलत नहीं था. Or maybe, you're walking and there are 100 people and I pull your hair and I say, I was just playing. I was having fun. I had no intention. Again, these are discussions to be had. Because we don't have time, I have to do a monologue. Intention doesn't matter as much as impact matters. So everyone, all of you should make sure that your boundaries are known to your friends and your colleagues. Right? My friends know which set of friends are allowed to, hug me, which set of friends are allowed to shake my hand, and which set of acquaintances I can say, okay, hello, namaste, good morning to, right? So you as individuals should, of course, establish very clear boundaries. Anyone who crosses that boundary, and they know, they've crossed it, it will be sexual harassment. Intention थी, नहीं थी. क्योंकि intention assess करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So, anywhere, right? Just look at those examples on the board. Anywhere can be a workplace. Even if I'm working at a hospital, even if I'm working at an NGO, anywhere I'm working can be a workplace. If now that I've come here, just for example, मैं अपने काम से ही travel कर रही हूँ, right? So even if something were to happen when I was traveling, when I'm here, that will also be sexual harassment at the workplace. Employer is not necessarily, ठीक है, now POSH Act कब लगती है? जब 10 से ज़्यादा लोग हो. But what about a maid who's working at home? Suppose there is a maid who's working at home and her employer, some man, he is harassing her. So what can she do? So for her also, so this is the act. So every organization has to have an internal committee, right? And every district has a local committee. So if there are women working in areas जहाँ पे 10 से कम औरतें हैं, so it is one woman, maid है, she can go to the local committee. Your college will also definitely have an internal committee. Ideally, you all should know the members of the internal committee, right? And some of you might even be representatives. So, जो भी committee होती है, it always has to have 50% women. Chairperson has to be women. It has to have representation from students and so on. So you should, also find out. It also very important has to have some external member. It cannot be कि सारे faculty और admin members college के ही हैं. कोई बाहर से ज़रूर होता है. And what the internal committee does, it receives your complaints in a very confidential manner. It conducts inquiries and it makes recommendations. So it will recommend whether that student or that faculty should be suspended, should be terminated, should just be asked to apologize, and so on. Okay. So, just briefly we are going to understand family law. Before we come to that, I hope there is a clear understanding. Criminal law जो है वो सबके लिए same है, right? If you have committed theft, whether you are Hindu, Muslim, Christian, same punishment. But personal law is different for everyone, right? Hindus have different personal law, Muslims have different personal law, Christians have different personal law, Parsis have different personal law. I hope we all know that. Personal law के ambit में क्या आता है? Marriage, divorce, succession and inheritance, adoption, maintenance, and so on. अच्छा, what is the age of marriage in India? For girls 21 हो गया है. So they are still considering it. It's a policy decision. They are suggesting that the minimum age for women should be 21. But as of now, 21 is the minimum age for boys and 18 is the minimum age for girls. Right? Now, marriages as per Hindu law are sacrament, right? It's not a contract. They are saying
janam jan matra ka saath hai, it's something that's very holy in nature, whereas Muslim law says that nikah nama hota hai, so marriage is a contract, right? Now what are the boxes that you have to tick for a valid marriage? Legal age hona chahiye, consent of parties hona chahiye, no prohibited relationships. So prohibited relationships are basically close relationships. So ideally you cannot marry your first cousin or even your second cousin, right? Both parties should be mentally sound. You cannot have more than one wife at a time. A person can't be married to more than one spouse at a time. Same thing, right? So we can avoid this. This is actually not legal, right? So these are the different laws that are there in India. Special Marriage Act is the act जिसमें जो हम बोलते हैं that if an intercaste marriage has to be done, not intercaste, actually inter-religion. So if a Hindu and a Muslim have to marry, they will marry under the Special Marriage Act. Otherwise you have the Hindu Marriage Act, you have the Christian Marriage Act, you have the Parsi Marriage Act. Okay. Registration actually is compulsory. Everyone should, of course, always register their marriages. If people don't register, it becomes very difficult later, right? It could be कि कोई आदमी है, उसकी पहले शादी हुई है, आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि दूसरी शादी, आपको पता ही नहीं कि शादी है ही नहीं. So when you go to ask for divorce and you say कि अब मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे को खर्चा चाहिए, तो वो कहेंगे कि आपकी तो शादी ही नहीं है. Now there are some ways in which marriage can be declared void if you want. So for example, if that person has any contagious disease, for example, if there has been any fraud or misrepresentation. So I give the example of that movie Raja Babu, Govinda's movie. No, too young for this. But there is a movie of Govinda. उसमें क्या होता है that Karishma Kapoor is the other actress. She falls in love with him, thinking he's a lawyer. तो वो उसके घर जाती है एक दिन, तो वो देखती है कि उसने लॉयर का भी फोटो है, वो जज की तरह भी फोटो है, वो एज अ डॉक्टर भी उसकी फोटो बनी हुई है, एंड ही जस्ट लाइक्स टू प्ले ड्रेस अप. ठीक है, बट एक्चुअल में आई थिंक वो 12th पास भी नहीं है. तो अगर ऐसा काइंड ऑफ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन आपके साथ हुआ है, फॉर सम पीपल इट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सन इज ऑफ द सेम कास्ट. सो सपोज आई एम ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट एंड आई आस्क दिस पर्सन एंड ही सेज आई एम ऑल्सो ऑफ दिस कास्ट. We marry, then I get to know it's a different caste. I can still file for divorce. Okay. So, just to tell you about divorce law in India. All right. So, I will just quickly come to what are the grounds for divorce in India. The first ground for divorce is adultery. I hope you understand what is adultery. Any relationship outside of your marriage is adultery, right? Second is desertion. Desertion is when the husband or the wife has left you and gone elsewhere. So you can say कि ये तो 2 साल या 4 साल से ये this person is living elsewhere. There is no point, so I want a divorce. Renunciation. कोई दुनिया छोड़ देता है, मतलब वो कहते हैं ना हमने मोह माया छोड़ दिया, now we will become a monk. Then also you can file for divorce. Insanity. If someone is suffering from, medically proved insanity, that can be a ground for divorce. Cruelty. Cruelty we will discuss after this. Impotency. Presumption of death. 7 सालों से किसी ने सुना नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं. You can file for divorce. Venereal diseases. Conversion. If someone converts to another religion, you can file for divorce. Okay, these are options which are available only to women. So bigamy, if the husband has engaged in rape, sodomy or bestiality, if there has been no cohabitation for more than 1 year, and option of puberty, मतलब 15 साल से पहले अगर किसी की शादी हो गई,
तो जब वो 18 के होते हैं, 15 से 18 के बीच में, they can say that, we don't want to be married to this person. Now I gave you an example of cruelty, right? So please understand that cruelty can mean physical cruelty, right? Marpeet. Cruelty can mean mental cruelty. So mental cruelty is like saying mean things again and again, belittling the person. It can be again emotional cruelty, gaslighting, playing mind games. Financial cruelty, not giving money to your spouse to run the house or for their basic needs. Social cruelty. Social cruelty is when you ostracize them in public or you engage in any demeaning behavior in public. And sexual cruelty. Sexual cruelty is basically marital rape. Is marital rape a crime in India? What is marital rape? If your spouse rapes you or has relations with you without your consent, marital rape. Is marital rape illegal in India? Is it a crime in India? That should be the question. Is marital rape a crime in India? Marital rape is not a crime in India. It's not recognized. So, if you're, but if you're being raped, you can of course file for divorce under that. Now, these are just some examples that I have mentioned, right? So, a lot of times, there was this thing where if you're again and again telling your husband to leave the paternal home, there was this thing that, if you're calling your wife some names, so these are all instances of cruelty. Most common, most clean way of divorce is divorce by mutual consent. So both people don't want to stay together, you go to court, आप first sign करते हो, you wait for 6 months and you go sign another time. Now this 6 months is a cooling period that is given. Cooling period is given for you to understand how it would be to live this life, where you could have a child to take care of, you would have to live alone, you would be ostracized by society and so on. There are divorces which happen by Khap Panchayat, which have no relevance at all. I had someone come to my home, she told me कि पंचायत में divorce हो गया. तो आई सेड वो तो माना ही नहीं जाता, कोर्ट में जाना पड़ता है. तो शी सेड कोर्ट में तभी जाना पड़ता है जब शादी रजिस्टर हुई हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन, राइट? सो यू हैव टू गेट अ डिवोर्स फ्रॉम कोर्ट. नाउ मेंटेनेंस. ओके, व्हाइल आई एक्सप्लेन, जस्ट हैव अ लुक एट दीज, है ना? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन मेंटेनेंस is that a wife, usually a wife, she could ask for money. Now there are two phrases, there is alimony and there is maintenance. Alimony is like a one-time payment and maintenance is a monthly payment. Now we've unfortunately heard of this case. You heard this case very recently of this man named Atul who put a video and then committed suicide because he was being harassed for maintenance. And he was being asked a very, very big amount. And there's another case, abhi recently court mein tha, there was this woman, she was asking for 15 crore rupees and shayad sirf 2 saal ki shaadi thi. Now maintenance di jati hai, maintenance di bhi jani chahiye in some cases. So court has a very balanced approach. So court says कि maintenance उतना दिया जाएगा जितना शादी के बाद उस wife का lifestyle है. For example, for someone, a driver could be a need. वो पूरी जिंदगी ड्राइवर उनके पास है. So अभी भी it is expected that they should have the kind of money where they can have a driver. For someone it could be something else. But court says, please understand, a lot of our parents का generation, the mothers were not working. So court says अगर आप पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पैसा मिलेगा. If you are educated, you can do a job and earn money, then you have to earn for yourself. Only if you are not capable for some reason to earn money, then maintenance is given. अब क्या होता है, जैसे ही मेंटेनेंस मांगते हैं तो द हस्बैंड से इसकी मेरे को पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, मेरे पास जॉब नहीं है, है ना? तो कोर्ट ने कहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप नहीं दोगे. इट इज़ द ड्यूटी. कब तक मेंटेनेंस देना है? जब तक वाइफ इज नॉट मैरिड, रीमैरिड, और
she doesn't have, another relationship. If you can prove that now she's in relationship with someone else, you don't have to pay maintenance anymore. Okay. ये भी देखिए. Wife cannot sit idle and seek maintenance. If she is capable of earning, she has to earn. Can husband claim maintenance? Could be na, someone is a house husband and the wife was earning. So there have been 1-2 cases, but cases हुए हैं where the court has given maintenance to the husband because the husband was not earning or was earning less than the wife. Can someone just tell me what is inheritance? मतलब it's written here, but क्या होता है inheritance? Exactly. So she's saying वसीयत. Basically, there are 2 kind of properties. सुनिए, एक प्रॉपर्टी तो है जो परदादा, दादा, पापा और हमारे पास आई है. एक है जो योर फादर और मदर ने अभी अपने लाइफ टाइम में पैसे जमा करके एक्वायर किए. तो बेसिक, अगर मैं बहुत बेसिक बताऊं, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ना, वो मैं कैसे भी अपनी दे सकती हूँ. आई कैन से कि मेरे पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैं एनजीओ को दूंगी, मेरे को बच्चों को किसी को नहीं देनी. मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जो मैं करूँ. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गोज टू ऑल द चिल्ड्रन. सपोज देर आर 3 sons and 2 daughters. तो जो वो प्रॉपर्टी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 5 और 3? 5? Correct, it's 5 only. So from 2005, पिछले 20 साल से गर्ल्स ऑल्सो गेट अ राइट इन द प्रॉपर्टी. वरना क्या होता था, गर्ल्स वर टोल्ड कि यू विल गो टू योर ससुराल, बट नाउ दे गेट अ राइट इन देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी, है ना. सो दे गेट अ राइट. Okay. For adoption, I will just tell you. So now there is a central agency who does adoption, right? We'll keep it short. Actually, more girls are adopted, and parents also want to adopt girls rather than boys. शायद हमारे मन में ये गलतफहमी होगी कि बहुत सारे बच्चे हैं और कम लोग हैं अडॉप्ट करने वाले. On the contrary, बच्चे कम हैं and there is a very big queue of people who are waiting to adopt, right? So Kara is the one who is responsible. Now just read the question that I've written. So a lot of people ask कि हमें रोड पे इतने बच्चे दिखते हैं, they are in such bad conditions, can't we adopt them? वो जैसी भी condition में हो, they still have their parent, right? So you can only adopt OAS, orphaned, abandoned or surrendered children. So do we still have time? Huh? No, 15 minutes. We are towards the end. We'll keep it short. So our topic was Indian law and constitution. Indian law देख लिया. थोड़ा सा constitution देखते हैं. India has the lengthiest constitution in the world. How many articles are there in the Indian constitution? Any random idea? और बहुत, how many articles? 549. 395. So you have 395 articles. US constitution has 7 articles. Okay, just for reference. Our constitution is written. UK का constitution is not written, right? What about our constitution? What else is good? We have an independent judiciary. US में क्या होता है कि जो भी president बनेगा, उनकी जो thinking के, if it's someone from the conservative party, तो वो जिस type का thought process होता है वैसे लेते हैं. But हमारी judiciary, अच्छा, how is the judiciary selected in India? Do we know? Like how does one become a judge and then how do you become a Supreme Court judge? Any idea? No, you don't need to be an advocate to be a judge. So basically what happens is every state
will have its exam for you to become a district judge. Why every state? So a lot of people say जैसे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम करो. लेकिन स्टेट का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गुजरात में इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ जज इन गुजरात यू हैव टू नो गुजराती, क्योंकि वो जो लिटिगेंट आ रहा है उसको तो इंग्लिश हिंदी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. Someone is there in Karnataka, you have to know the local language. Someone is there in Northeast, you have to know the local language. Now, once there are judges at the district level, if they do well, they are elevated to the High Court. There is a collegium. I haven't written the word. There is a collegium. That body decides कि कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कौन से जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे एंड सो ऑन. नाउ ये जो कलीजियम है ना, इसमें टॉप 5 जजेस होते हैं सीनियर मोस्ट. सो गवर्नमेंट कह रही है कि देयर शुड बी अ बॉडी जहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हों और जजेस भी हों. सो इज दैट लाइक डज दैट साउंड बेटर? डज इट साउंड बेटर टू हैव अ बॉडी जिसमें 5 जजेस हैं या ऐसी बॉडी जिसमें 3 जजेस हैं और 2 मिनिस्टर हैं? विच बॉडी सीम्स बेटर टू डिसाइड कि हु शुड बी अपॉइंटेड एज जजेस? 5 judges, obviously, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लिटिगेंट. मैक्सिमम केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मैक्सिमम केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं. तो अगर मिनिस्टर्स बैठे हैं तो फिर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हूँ, मैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी जजमेंट दूंगी नहीं. आई विल ऑलवेज गिव इन फेवर ताकि मुझे प्रमोशन मिले. सो दैट इज जस्ट सम डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन. ऑफ कोर्स we also have single citizenship. There are many countries like US who offer dual citizenship to their citizens. And we have a very elaborate preamble. Who is this on the left? Ambedkar is the father of the Constitution. Yes, we understand that. Now, if we look at the preamble starts with we the people of India. मतलब हमारे पास पावर थी, हमने पावर दी है मिनिस्टर्स को या जिसको भी टू मेक द लॉज. सो द पावर एक्चुअली बिलोंग्स टू अस. आई विल जस्ट रीड दीज 6 वर्ड्स. इफ यू नो द मीनिंग प्लीज टेल मी. हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign. What is sovereign? Any idea? So sovereign is basically, if I say I am a sovereign authority, means I will decide things for myself. No one else can influence me. तो इंडिया क्या कह रही है कि इंडिया अपने लिए डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है. इंग्लैंड या कोई और आके हमें नहीं कह सकता. सो आई एम अ सॉवरन अथॉरिटी. इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री. वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू. सोशलिस्ट. व्हाट इज सोशलिस्ट? व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ सोशलिस्ट? करेक्ट, कैपिटलिस्ट, राइट? ऑपोजिट नहीं होते बट लोग बोलते हैं कि सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आर ऑपोजिट. बाय सोशलिस्ट वी मीन दैट वी आर अ वेलफेयर स्टेट. बाय वेलफेयर स्टेट वी मीन दैट वी विल हेल्प द पर्सन एट द ग्रास रूट. सो इट्स नॉट ओनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एवरी पर्सन विल गेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. वॉट इज सेक्युलर? सेक्युलर, हैव वी हर्ड द वर्ड? वॉट इज सेक्युलर? Secular basically means that the government will not support any one religion. The state has no religion. So the state is equal towards all religions. What is democracy? Democratic? Vote. So democracy is basically somewhere, so what you are telling is a good or a free democracy. Democracy is somewhere where one has the right to vote. What is republic? So where the head of state is nominated and not by birth. So UK में by birth होता है. It's now Prince Charles. Then it will be, who's the next person? Prince William, right? So instead of that, here we have a nominated president. So these are the important words. Of course, our constitution, our preamble tells us that there will be justice, liberty, equality and fraternity. Now just very, very quickly looking at our fundamental rights.
fundamental right, the most important is equality before law. Now equality before law का मतलब क्या है? Treat equals equally and unequals unequally, right? So have you seen this? You must have seen this on social media also, ये equality and equity वाला. अगर अलग अलग हाइट के लोग हैं और सबको आप सेम चीज़ दे दो कि हम तो इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दैट विल नॉट सफाइस देयर पर्पस. So you have to give what is needed, wherein shorter person will get more benches, the taller person will probably get one bench less, and so on. So equality means treating equals equally and unequals unequally. So for example, if women are getting or girls are getting period leave, right? So you are treating equals equally, you are giving period leave to all girls, and unequals unequally, so you are not giving that leave to men, because they are two different sects where this conversation is concerned. 15 says you cannot discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, right? So this was very important at that time. Specifically 2A में mentioned है कि आप होटल में एक्सेस टू रेस्टोरेंट्स, एक्सेस टू शॉप्स रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप यूजेज ऑफ वेल्स एंड टैंक्स रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. बट 15(2)(b हैज दिस बिन रियलाइज्ड? हैज 15(2)(b बीन रियलाइज्ड? या अभी भी ऐसा होता है दैट देयर आर सर्टेन घाट्स, there are certain wells that are restricted for people of a particular caste. Now I have a question. 15 says that you cannot discriminate on the basis of caste. So then how do we have reservation? How does that happen? So in 15 only, article 15 में ही नीचे लिखा है that you can have reservation for SC, ST and EWS. Similarly, 16 talks about equality of opportunity in matters of public employment. In this also नीचे लिखा है that for SC, ST, OBC and EWS, you can have certain exceptions. 17 talks about untouchability abolition. 18 talks about abolition of titles. These are done. The most important or the most spoken about article is article 19, which talks about your freedoms, right? Fundamental freedoms. So the first one is freedom of speech and expression. So I should be allowed to say what I want, whenever I want? No. Like what should be the rider? What should be the reason that, okay, this is the limit, that now you cannot? Correct. She's going in the correct direction. Please remember one thing, no right is absolute. No right is absolute. अगर freedom of speech and expression है, it is subject to law and order. It is subject to public health and morality. It is subject to friendly relations with states. तो आप जाके इटली मुर्दाबाद नहीं बोल सकते, because then you will be, spoiling India's relations with Italy. You cannot go and say something. You have freedom of speech and expression does not mean that you go and say something against someone else that might create a law and order situation. Freedom of assembly, again freedom of assembly is restricted by, peace. So जब 144 लगता है, we've heard कि 144 लग गया है. In any situation, if you've heard, in Delhi it happens a lot, that not more than 4 people can assemble. Freedom to form associations, freedom of movement, freedom of residence and freedom to carry out business. So जब भी government tries to regulate businesses say कि what about 19(1)(g? We have the freedom to carry out our business. हमारा न्यूज़पेपर है, आप कह रहे हो कि न्यूज़पेपर में सिर्फ 10 पेज रख सकते हैं, 10 में से सिर्फ 2 पेज में एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं. So you are infringing 19(1)(g. Article 20, first one, you cannot be convicted for an offence which was not in force at the time when the action happened. So which I told you before, prospective effect होता है, retrospective effect नहीं. आपने हिरन का शिकार किया आज,
लेकिन 2 महीने बाद नोटिफिकेशन निकला है कि killing any kind of wild animals or domestic animals is prohibited. So now you cannot be convicted for it. Second, you cannot be punished for the same offense more than once. Only once you will be punished for an offense. And third, you cannot be compelled to be a witness against yourself. So people do give confessions, but it cannot per se be forced that you must confess. So that is why जब polygraph test कराते हैं, right, or they say that lie detector test, people say कि you're infringing article 23 क्योंकि lie detector में तो I'll be forced to say the truth, or you'll get to know if I'm not saying the truth. And the last one to discuss was no person shall be deprived of their life or personal liberty. Constitution is a dynamic document. Constitution 1950 में आया था. 75 years, exactly 75 years have passed since. So many things have happened. All the rights are realized under Article 21. Right to a healthy and clean environment was recently realized under Article 21. Right to privacy, Article 21. There are also, other right to sleep is also recognized as a right under Article 21. Right to marry. But it's like, so court had to clarify it's right to marry, not right to marry a person of your choice. So it's just the right to marry you have. And any other right that is there, it is usually realized under Article 21. Right to education bhi pehle isme tha, then it became a separate fundamental right in 21A. That is it from my end. Any questions? Thank you. Great speakers inspire great minds, and today we have had the privilege of experiencing just that. On behalf of our university, I extend my heartfelt gratitude to Ms. Nandita Gugnani for her inspiring and thought-provoking session. Your words have not only enlightened us, but also have sparked a deeper appreciation for the legal profession. Your journey from a teaching and research associate at GNLU Gandhinagar to an assistant professor at GNLU Silvassa is a testament to your dedication and passion for shaping the future of legal academia. We are immensely grateful for the knowledge and experiences you have shared with us today. Thank you for sparing your valuable time to be with us. Your presence has truly made this event even more memorable, and we hope to have you with us again in future. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to request Dr. Krunal Soni to felicitate ma'am with a memento.